But immediate when I started preparing, like I started preparing full-fledgedly in February 2022. My mother got diagnosed with cancer in December 2021. With all the challenges in my life, अगर job नहीं होता, I would have done full-time, then I would not have been able to. Since job था, rather I have a different perspective कि job की वजह से हो पाया. Aspirants who have appeared in prelims 2024, now only 2.5 months are left for the mains this year. What you will suggest कि this period how they should utilize? कभी आपको ऐसा लगा कि it will be tough, difficult, तो कभी माइंड में ये सवाल आया? Every day, sir. जब UPSC की आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो what are the important factors or considerations which one has to keep in mind कि आंसर कैसा लिखना है? So I would say कि ensure you have content for every topic of the syllabus. दोस्तों आज हम बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से बात करने वाले हैं जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में सेकंड रैंक हासिल की है. जी हाँ, अनिमेश प्रधान. अनिमेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you so much, sir. अनिमेश जी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, ही कम्स फ्रॉम तालचेर उड़ीसा और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ये आते हैं. देन ही कम्प्लीटेड हिज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम NIT राउरकेला. उसके बाद IOC में इन्होंने जॉब किया, जॉब के साथ प्रिपरेशन की. और जो सबसे इंस्पायरिंग आप लोगों के लिए है और इनके लिए बहुत स्ट्रगलफुल फेज था, वो ये है कि जब ये 11th क्लास में थे, ही लॉस्ट हिज फादर. और आप सोच सकते हैं कि अगर पिता का साया अगर उठ जाए तो इमोशनली ओवरकम करना कितना टफ होता है. और उतना ही नहीं, जब ये फाइनल रिजल्ट आने के पहले ही लॉस्ट हिज मदर ऑल्सो. And during the time of preparation, he was assisting mother in treatment. It must be a very tough phase for him. So Animesh, it is a very inspiring for the aspirant and it has been a struggle for you and you are a great inspiration, I must say. और फिर जो आपका स्कोर है कि GS and SA, it was one of the highest scores. और rank 2, मतलब it is like dream for many and students are dreaming. तो अनिमेश जी, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि जब ये टफ फेज में आपने यूपीएससी की अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया एंड हाउ यू गॉट सेल्फ मोटिवेटेड, या क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा? First of all, thank you for having me here, to the entire team and you especially as well. And sir, I think UPSC as कि ये करना and to become an IAS officer was an inspiration जो कि चाइल्डहुड से था, एज फार एज आई कैन रिमेंबर स्कूल डेज से, कि दिस वाज द ड्रीम दैट आई हैड. एंड पापा ही थे जिन्होंने दैट सीड हैड पुट इन मी कि एंड देन ओवर द इयर्स आई हैड माय इंक्लिनेशन टू. बट इमीडिएट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, लाइक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फुल फ्लेजेडली इन February 2022 आफ्टर आई जॉइंड इंडियन ऑयल. And my mother got diagnosed with cancer in December 2021. And the time जब वो diagnosis हुआ, already it was stage 4. Oh. So we knew that I knew because I was the one जो कि front line was to talk to the doctors. So we knew कि वो prognosis बहुत poor है. The life expectancy after that is pretty less. ये बहुत ही tough phase of life. एक तरफ तो फादर नहीं थे और फिर मदर को भी कैंसर डिटेक्ट हो गया, उधर आप तैयारी कर रहे हैं. So I was like कि जॉब के साथ करना and all, थोड़ा बहुत I start preparing and all, but when mother got diagnosed I knew कि I don't have a lot of time. And the motivation factor immediately was कि I'll have to do it as soon as possible ताकि she would be able to see the results. Unfortunately she could not. एक महीना और होता तो she could have at least seen this. But the motivation was every time, इतनी जो भी परेशानी थी, everything, it was always कि I don't have a lot of time. I have to do it in first attempt as soon as possible so that she would be able to see this. This is very, मतलब जब सुनकर के इतना ऐसा लग रहा है कि कितनी टफ फेज थी, बट यू वाज लिविंग दैट फेज. इट वाज रियली टफ. नाउ कमिंग टू द फेज ऑफ प्रिपरेशन, यू वाज इन जॉब एंड जॉब के साथ साथ आपने तैयारी की. सो इज इट पॉसिबल फॉर एनी एस्पिरेंट टू वर्क एंड प्रिपेयर, बिकॉज यू हैव डन, सो व्हाट अप्रोच you followed? So now since I've cleared it, so probably I'll tell with some credibility कि it's possible. But to be honest sir, हर रोज लगता था कि I'm doing inadequate. क्योंकि इतना चारों ओर आप इतना सुनते हैं कि people are studying for 10 hours, 12 hours full time, इतने ज़्यादा resources follow कर रहे हैं. And मुझे on a good day, on a working day, I was to get 5-6 hours and weekends pay 8 to 10 hours. And उसका job has its own responsibilities and everything.
Possible तो है sir, but I think it takes a lot. Like you'll have to sacrifice on a lot of other fronts as well, and it becomes difficult. It took a toll on your physical and mental health as well. But in my opinion also, this was a conscious decision. तो मैं स्टार्टिंग से वो कंप्लेन करना बंद कर दिया कि दूसरे लोग मुझसे एडवांटेजेस एंड ऑल, बिकॉज दिस इज समथिंग आई चोज कि मुझे करना है जॉब के साथ. एंड वो जो पीस ऑफ माइंड आती है कि इफ आई डू नॉट क्लियर दिस इन दिस अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में, so still I'll have a job. हर महीने I'm getting ठीक ठाक salary as well. The perks and allowances, I was at IOC, the perks and allowances was also good. तो वो peace of mind was also somewhere कि वो मुझे help किया to do this. अगर with all the challenges in my life, अगर job नहीं होता, I would have done full time, then I would not have been able to. Since job था, rather I have a different perspective कि job के वजह से हो पाया. तो at time job becomes helpful कि आपके पास एक job है, mentally you are stable or you are not worried about कि मेरा career कहीं disturb ना हो जाए, and that helped you to develop this better understanding of exam. तो इस preparation में what was your approach to start with? आपने NCERT से start किया या text book से या online portal से? How you begin? So I started with like the syllabus and NCERTs, but although I started in 2022, early 2022, but उस time पे when I had joined just IOC and was planning कि देना है, कौन सी year देना है, what options should I keep, तब I saw a lot of topper videos and everything. So then I picked up syllabus and फिर books खरीद ली, and I started with NCERTs for a couple of subjects, but I did not do for a lot of NCERTs for everything because पता था कि टाइम नहीं है बहुत, तो आई हैव टू ऑप्टिमाइज का. आई डिड नॉट हैव द लग्जरी कि 6 to 10 सब पढ़ो. जहाँ जब ज़रूरत होती थी फ्रेश टू गो बैक, बट मोस्टली 11th and 12th के NCERT से आई स्टार्टेड एंड मेड अ प्लान कि क्या क्या करना है, एंड आई स्टक टू दैट. So along with the job, how many hours in a day you could get time for study? 5 to 6 hours on a good day, but there were days जिस दिन कुछ नहीं पढ़ा हो गया, 30 minutes, 1 घंटा. बट वो ट्राई रहता था कि लाइक आई बी कंसिस्टेंट एंड डू नॉट लीव. एवरेज आउट हो गया 5 to 6 5-6 hours on a good day, but that was the maximum. Holidays you must be. हाँ, holidays I used to optimize as much as possible, 8 to 10 hours plus. बट वो भी होता था कि सिंस पूरे साल मतलब पूरे वीकडे भर वो 5 से 6 घंटा ज्यादा पढ़ ही नहीं पाया, तो सैटरडे संडे को इवन टू गैदर वो 10 घंटे बैठना वाज आल्सो अ लॉट. बट आई यूज्ड टू ट्राई कि वीकेंड्स और हॉलीडेज पे 8 to 10 hours. And when you started after completing your BTech or during the time of BTech itself? No, after I joined IOC. जब join कर रहा था then I had seen वो strategy videos and everything, वो सब books खरीद ली थी. But full-fledged preparation in after I joined IOC. Okay. तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कभी आपको ऐसा लगा कि इट विल बी टफ डिफिकल्ट, तो कभी माइंड में ये सवाल आया? एवरी डे सर, आई मीन हर दूसरे दिन तो लगता था कि, एंड हैड ऑल पॉसिबल रीजंस टू गिव अप. बीच में आई कुड हैव गिवन अप कि मम्मी का ख्याल रखते हैं, आई फॉर या फिर जॉब तो चल रहा है. आई हैड नॉट फिल्ड फॉर 2024 अटेम्प्ट इधर बिकॉज आई वांटेड टू गिव अटेंशन टू माँ, बट hopefully I made it through, but लगता था कि नहीं हो रहा था. I was not ready for a second attempt also mentally. But क्योंकि आपका जो ये एफर्ट रहा इस पीरियड में, this efforts was exceptional, मतलब ये तो विजिबल है आपके रिजल्ट से. तो उस एक्सेप्शनल एफर्ट्स में एक्सेप्शनल क्या था? सोर्स ऑफ स्टडी या योर राइटिंग स्किल, और इट वाज a factor which I will say luck, or it was a combination of everything? It's a combination of everything, but also I would admit I had been, at least this result department, extremely lucky because I was in the right place with the right time, everything fall into right place. But I think a lot of my upbringing helps. This is something that also a context to it, because my father and mother both come from academia. My father was a political science lecturer and my mother was a history postgraduate. So while growing up, our dinner table conversations were all about क्या पॉलिटी में चल रहा है, इकोनॉमी में चल रहा है. सो एंड इन कॉलेज आई डिड मैसिव डिबेटिंग एंड जर्नलिज्म, सो इज ऑलवेज अ वेरी अवेयर सिटीजन. So when I started preparation also, although I mean I did not pick up a UPSC book ever in college, but it was seamless. वो from college to preparation का जो shift था वो इतना difficult नहीं था, because a lot of my upbringing helped. And वो answer writing and everything I was, because मैं journalism करता था 2 साल college में, तो हर वीक हमें आर्टिकल्स लिखने पड़ते थे, 2 आर्टिकल्स. सो मेरी तो आंसर राइटिंग प्रोबेबली कॉलेज से स्टार्ट हो गई थी, आई वुड से,
बट आई डिड नॉट डू दैट कि यूपीएससी के लिए करना है, बिकॉज जस्ट आई लव जर्नलिज्म. तो वो मेरी अपब्रिंगिंग एंड एवरीथिंग हैज हेल्प्ड हियर एज वेल. तो डिबेटिंग मस्ट हैव हेल्प यू इन इंटरव्यू, क्योंकि वो जो आपके बोलने की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं, एंड जर्नलिज्म दैट आई थिंक डेवलप्ड योर आंसर राइटिंग. यस यस. जब यूपीएससी की आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और कंसिडरेशंस व्हिच वन हैज टू कीप इन माइंड कि आंसर कैसा लिखना है? So I think so that's what I used to always keep in mind कि मैं कोई भी इस मटेरियल पिकअप कर रहा हूँ या फिर कोई बुक पढ़ रहा हूँ, आई वुड स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इससे मैं आंसर कैसे लिख सकूँ, एंड नॉट लाइक नॉलेज गेन करना शुड नॉट बी द प्राइमरी गोल. वो सेकेंडरी होना चाहिए. प्राइमरी क्या, हाउ डू आई प्रोड्यूस दैट नॉलेज इन द पीस ऑफ पेपर. एंड तो आंसर राइटिंग था ये होता था सर, आई हैड मेड माई नोट्स इन अ वे ऑल्सो इन आंसर के फॉर्मेट पे, एंड द बॉटम लाइन बिंग की आई हैव टू मेक द लाइफ ऑफ द एग्जामिनर ईजी. उसको आप परोस दो लिख के कि मुझे पता है. सो आई वुड टू राइट उस तरीके से, एंड कि इट्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू ग्रास्प कि मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं. एंड आई यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन वैल्यू एडिशन मटेरियल, जैसे कोर्ट जजमेंट्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, दैट आई यूज्ड टू एंश्योर कि हर पॉइंट में हो, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि कॉम्पिटिशन उतना लेवल पे है कि सिर्फ बेसिक लिखने से होगा नहीं. So consciously I was making notes also. I used to insert all this value addition material. Animesh, essay was one of your best score area. What practice you did something for essay, or it was first time you written in the exam? I did a lot of practice, sir, because although I had a knack of writing, because college school times I was writing, but I understood is कि you can't take anything lightly इस exam में. So I did not prepare prelims से पहले बहुत कुछ, but prelims के बाद what I did that I used to, before sleeping I used to read कोई एक essay किसी टॉपर का, and I used to take a snapshot of जो भी अच्छी चीज़ें उनका, and I made a compilation and I used to revise that, and I gave around 8 to 10 tests, got it evaluated, and उस पे whatever I was getting feedback I improved upon that. Now the aspirants who have appeared in prelims 2024, now only 2.5 months are left for the mains. Correct. This year इस बार थोड़ा गैप भी कम है. Exactly. So what you will suggest कि this period how they should utilize, and especially mains, what value addition can be done in these 2.5 months? So I would say कि ensure you have content for every topic of the syllabus. That is the foundation one. ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक आप छोड़ दीजिए, दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू. एंड सेकेंड इज कि आपके जो एग्जिस्टिंग नोट्स है, आई थिंक जहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड कंटेंट मिल रहा है, यू शुड डू दैट. लाइक अ लॉट ऑफ कंपाइलेशंस कम ऑफ वैल्यू एडिशन मटेरियल. आई हैड ऑल्सो पिक्ड फ्यू लॉट ऑफ टॉपर के रेडीमेड चीज़ें मिल जाती है आपको. इफ़ यू कुड यूज़ दैट ऑल्सो यू कैन डू दैट, एंड एंश्योर कि आपके हर कंटेंट के पास यू हैव द वैल्यू एडिशन मटेरियल. एंड आई यूज्ड टू मेक अ माइक्रो नोट्स आउट ऑफ दैट एज वेल. एंड कि मेरे बेस नोट्स तो हैं फॉर लास्ट मिनट रिविजन्स, वो लास्ट के 7-14 दिन के रिविजन के लिए आई यूज्ड टू रिफर ओनली वो माइक्रो नोट्स. सो आई यूज्ड टू मेक माइक्रो नोट्स के थिंग्स एज वेल. एंड आई थिंक वो अभी वट एवर टेस्ट यू राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके मॉडल आंसर्स वुड बी प्रिटी क्वालिटेटिव. तो उसको आप इंटीग्रेट कीजिए एंड कीप राइटिंग, मतलब इटरेशंस में रिवाइज एंड राइट द पेपर्स. दैट वुड हेल्प. Okay. Coming from computer science background and opting sociology, this decision was inspired from someone, or how you opted this optional? So sir, I had one paper as an optional in fourth semester, introduction to social movements in India. So then I got introduced to sociology as a subject, तो तब मज़ा आया था. तो but then while choosing I thought I'll take maths. बट फिर आई अंडरस्टूड कि मैथ सेल्फ स्टडी से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एंड कोई सपोर्ट नहीं, एंड द सिलेबस इज ऑल्सो वास्ट. देन आई सॉ लॉट ऑफ टॉपर वीडियोज एंड लॉट ऑफ ऐसे देखा नोट्स, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. फिर लगा कि सोशियोलॉजी इज प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग टू टेक. गुड. सो सोशियोलॉजी के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि दोज हू आर फ्रॉम साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी, हाउ इट फिट्स टू देम? So I think the sociology as a subject, so I will tell with a lot of bias because I had a lot of interest in that subject. But I think it helps in a lot of your other papers as well. आपके GS1 में तो society में तो it helps. It helps in your GS2 में social justice में, it helps in ethics, it helps in essay. There was one essay where it came directly out of patriarchy ऊपर था, where I would have written a lot of from my sociology knowledge.
तो since it has a lot of overlapping nature है इसका different GS papers से, it's something worth taking and seeing at least as an option आप जब decision ले रहे हैं. In optional, you scored, I believe, 286. Yes, sir. And coming from the computer science background, the efforts which you put in sociology, so you feel that your score was one of the good scores? I mean, now, sir, I should not have any complaints, but I thought जब आया था rank and the marks नहीं आया था, I thought probably I would have scored 300 plus and that would have helped me because I genuinely loved writing answers and but I'm happy with the scores, but I as a person थोड़ा would always feel कि थोड़ा better होता and sociology in general was like something that I was extremely passionate about. तो but no complaints, but मेहनत तो की थी sir. Yeah, finally cumulative performance. Exactly. That is important. Yes. Rank has come. Exactly. And that is exceptional. Animesh, my next question is related to interview. Correct. Because being an engineer, then sociology, during that 30 to 35 minutes, 40 minutes, what kind of questions you faced? Were there any questions from the engineering background or your computer science? There were, as in sir, I mean that was thoda alag. A lot of people say कि you will not be asked a lot from the graduation subjects and all. अगर भी पूछेंगे तो ask about technology in general and everything, which we prepare properly and all. But there's one board member who had like throughout his time he asked me core computer science about operating system के kernels के concept, different algorithm, उसके time complexities ये क्यों है, space complexity वो क्यों नहीं है. Which I had have like ऐसा लगा that part was grand viva college का. So I was asked computer science core theories. तो दोस्तों ये चीज़ जानना जरूरी है कि UPSC always comes with the bouncers. It does. Sometime it surprises. And we have seen कि last year CSET paper was tough in 2023. This year it was easy. Difficulty level of GS also was this year less. In interview also the same thing had been seen. From some students, there may not be a single question from the college's curriculum. And as Animesh told that he faced multiple questions from core computer science. Yeah. So everything has to be prepared. Exactly. Animesh ji, what you feel that during the time of interview, up to which depth students should prepare? I think for at least the things that you are associated with you, the place you come from, the kind of job you do, like I was in IUC. So energy, renewables, oil and gas become very necessary things. Computer science and all, like all this, I might not have gone through a lot of my textbooks, computer textbook, but you, like I had like in thoda depth mein I had gone through this concept as well. So I think interview mein more than the breadth, the depth also matters in terms of at least the things that you are associated with. Other random topics पे you might not go through a lot of depth, but at least जिस पे आपकी educational और employment या mother, father का come from आपके native places associated है, उसका depth तो आपको लेना चाहिए. दोस्तों ये discussion था Mr. Animesh, who has secured All India Rank 2 and he is computer science graduate from NIT Rourkela, coming from very humble background as discussed. UPSC is examination which is open and playing field for everyone. It all depends ki how you prepare and how you perform. And this is a dream for many. Animesh, would you like to give any last moment, any strategy or any suggestions or any guidance to the students who are going to write this mains examination? This to be taken care and this is important. So mains, I think, so it would be the most intense process, and it's okay if you are pushing your boundaries for this 2.5 months, and make sure that you have an intensified. What I feel is that you require a level of intensity at least for these 2.5 months, and ensure you cover everything holistically and do a lot of answer writing, because more than the mental strength, you require a physical strength while writing so many papers at one go as well. So keep writing as many tests as possible and improvise upon the feedback that you get, and keep your support system also intact. Thank you for coming in Next IAS studio, and once again congratulations. Thank you so much.